ये है वो एग्जैक्ट रोड मैप जिसकी हेल्प से मैंने और मेरे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने करोड़ों का बिजनेस बनाया है। अबे इधर 1 लाख नहीं बन रहा और तू करोड़ों की बातें कर रहा है। ये सब ना वीडियो में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। मुझे बिजनेस चलाना बिल्कुल नहीं आता और ना मेरे पास करोड़ों रुपए हैं इस बिजनेस को लॉन्च करने के लिए। अरे भाई, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल का दर्द, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई विल बी गिविंग यू एक्शनेबल स्टेप्स सो दैट इस वीडियो को देखने के बाद यू कैन एक्चुअली फॉलो योर 1 करोड़ जर्नी एंड मूव फॉरवर्ड। क्योंकि हर साल इंडिया से लाखों लोग अमेरिका, कनाडा जैसे कंट्रीज जाते हैं विद जस्ट वन ऑब्जेक्टिव, डॉलर्स में कमाना है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताऊंगा जिससे तुम इंडिया में बैठे बैठे डॉलर्स में पैसे कमा सकते हो। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग एन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल वे ऑफ डूइंग बिजनेस ऑनलाइन, दैट इज ई-कॉमर्स। नाम तो सुना ही होगा, बट आज आप इसे ठीक से समझोगे। मैं बात कर रहा हूं Amazon FBA की। इन अदर वर्ड्स, इट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग एन ई-कॉमर्स बिजनेस। बट फर्स्ट लेट मी मेक सम थिंग्स क्लियर। इस ई-कॉमर्स बिजनेस को करने के लिए यू डू नॉट नीड एनी स्पेशल स्किल्स। यहां तक कि यू डोंट इवन नीड टू सेट अप अ वेबसाइट, हायर एनी एम्प्लॉइज, रेंट आउट अ वेयरहाउस और डू एनी पैकेजिंग वर्क। एंड सबसे बड़ी बात, आपको कस्टमर से इंटरेक्शन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी विल बी यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ जायंट लाइक Amazon जो तुम्हारे लिए इन सारे बोरिंग कामों को करेगा। यस, यू हर्ड मी राइट। हम Amazon FBA की सर्विस को यूज करेंगे टू स्टार्ट, लॉन्च एंड स्केल योर ई-कॉमर्स बिजनेस। FBA मींस फुलफिलमेंट बाय Amazon। इन सिंपल वर्ड्स, Amazon एक छोटी सी फी लेकर आपके लिए इन सारे बोरिंग स्टेप्स को मैनेज करेगा while you focus on marketing, sales and counting those dollars. So let's first address the very basic things that you need to get started with this business. Here's what you need: एक simple PC या laptop, a very good internet connection, a bank account on your name to receive those payments, एक address proof so that you can register with Amazon, and about 4 to 6 lakh का investment. नाउ ये इन्वेस्टमेंट आप कहाँ से और कैसे अरेंज कर सकते हो, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड डोंट वरी, इट्स नॉट गोइंग टू बी लोनिंग मनी फ्रॉम योर बैंक। आई एम श्योर आपके डाउट वाले आईब्रोज ऊपर उठ गए होंगे, बट भरोसा रखो, इस चैनल से मैंने आपकी लाइफ नहीं बदल दी तो इस चैनल का नाम बदल दूंगा। एंड येस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, अगर कोई तुम्हें बिना किसी इन्वेस्टमेंट के करोड़ों रुपए कमाने का तरीका बता रहा है तो बॉस पहली फुर्सत में वहां से भाग जाओ, बिकॉज बिना किसी इन्वेस्टमेंट के इतना ज़्यादा पैसा कमाना पॉसिबल नहीं है। Okay, now that we have our expectations aligned, let's do some basic math. Let's break this 1 crore figure down to something that we can confidently achieve and aim for. सबसे पहले you need to understand, ये जो 1 crore का figure है, this may achieve like a big deal to Indians living in India. But since we are going to be doing an e-commerce business, we will be selling to Americans and charging them in dollars. So, if we convert this 1 crore rupees का figure to dollars by dividing it by 83, it simply becomes $1,20,481.9. इसको हम राउंड ऑफ करके $1,20,000 समझ लेते हैं। अब भाई, टेल मी समथिंग, क्या 1.2 lakhs इंडिया में हर साल कमाना कोई मुश्किल काम है? नहीं ना। सेम उसी तरह यूएस में 1.2 लाख डॉलर्स कमाना इन 1 ईयर इज वेरी नॉर्मल। To make 1.2 lakh USD in 12 months, you simply need to make $10,000 every month. Now, this becomes our primary target. हमें सिर्फ $10,000 per month बनाने में फोकस रखना है and everything else will fall in place. अब यहाँ आपको एक assumption लेना पड़ेगा, and that is we will be selling a product on Amazon जिसको on average हम $25 के प्राइस पॉइंट पर सेल करेंगे, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट के नीचे वाले प्रोडक्ट्स में आप यूजुअली एक बड़ा प्रॉफिट वाला बिजनेस नहीं बना सकते। So, if our selling price is $25 and our target is to make $10,000 every month, how many pieces do you think we need to sell? ये तो स्कूल वाला मैथ है। आगे आंसर सिंपल, इट्स जस्ट अबाउट 400 यूनिट्स, मतलब दिन के सिर्फ 12 से 13 ऑर्डर्स। अब आप ही बताओ, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करो तो क्या दिन के 12 से 13 ऑर्डर्स लाना कोई मुश्किल काम है? नहीं ना। बन गया ना 1 करोड़ का बिजनेस। ओके, सो नाउ दैट वी हैव आवर क्लैरिटी ऑन हाउ कैन वी मेक आवर $10,000 per month by just selling 12 to 13 pieces of our product per day, let me tell you how to start this business. To do this business, there are 3 important steps that you need to focus on. The first one is to find a killer product.
In this step, your goal is to find a product जिसकी डिमांड मार्केट में पहले से स्ट्रांग हो बट कंपटीशन उतना हाई नहीं होना चाहिए. In other words, there should be fewer sellers trying to sell this product in the market. To discover some winning product ideas, you can simply go to Amazon US की वेबसाइट and browse their best sellers list. यहाँ पर Amazon आपको खुद दिखाता है कि कौन से कैटेगरीज या सब कैटेगरी में which products are doing the most amount of business. अब for example, check this product out. अगर आप इस प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो you can clearly सी इसने पिछले मंथ ही 70,000 पीसेस बेचे हैं. इसकी करंट सेलिंग प्राइस है अबाउट $36. मतलब इसने पिछले महीने ही $2.5 मिलियन का बिजनेस किया है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ रुपए, वो भी एक महीने के अंदर. वंस यू फाइंड अ डिसेंट प्रोडक्ट आइडिया, देन यू नीड टू फिगर आउट कि हाउ विल यू गेट अ सिमिलर प्रोडक्ट इन द मार्केट टू सेल. फॉर दिस यू नीड टू फाइंड सप्लायर्स, जिसको हम मैन्युफैक्चरर्स भी कह सकते हैं. द बेस्ट प्लेस टू फाइंड मैन्युफैक्चरर्स ऑन द इंटरनेट इज Alibaba.com, which is the world's largest marketplace for discovering factories. To find suppliers, you simply need to open Alibaba.com and then click on manufacturers. यहाँ पर आपको उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है जिसके लिए आपको फैक्ट्रीज ढूंढनी है. Once you write the name of the product and hit search, आपके सामने चाइना के टॉप सप्लायर्स की लिस्ट आ जाएगी. All you need to do then is to connect with them, negotiate and get the best pricing possible. Now, the most important thing before you take this product to the market is going to be packaging, which is a loose term for a brand. Now, tell me something. There are these two bottles, both of which cost you 20 rupees. इसमें से आप कौन सा बॉटल खरीद कर उससे पानी पियोगे? Of course, the one with the Bisleri label on it, right? Similarly, आपको भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए अपनी एक यूनिक ब्रांडिंग सेट करनी पड़ेगी. To do this, you would need help from an expert designer who has some experience. For this, you can simply visit websites like Fiverr, Upwork or Behance and find someone with talent to collaborate with them to create your own original brand from scratch. So now that you have figured out your product, your manufacturing partner and your brand, you are ready for business. Once you launch your product on Amazon US, you should start getting orders from day one. And उससे भी बड़ी बात यह है कि in this entire process, you would have learned a lot of things. जैसे कि market research, data analysis, international communication, copywriting, marketing, sales, branding and a lot more. Attempting to do this online business would not only help you build another source of income for yourself, but it would be as good as a real life MBA crash course. अब let's address the final thing. याद है requirement stage में मैंने आपसे 4 से 6 लाख की इन्वेस्टमेंट की बात की थी. एक address proof so that you can register with Amazon and about 4 to 6 lakh का investment. So now let me tell you how can you all manage to get this investment from scratch. I'll be telling you 2 methods and trust me, none of them are easy, but both of them work. जब तक तुम्हारे पास अपना खुद का Amazon business start करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, you should work for somebody who is already running an Amazon brand. A lot of sellers selling on Amazon USA need services like product photography, listing management, graphic design, influencer marketing, social media marketing and so on. So you can spend the next 2-3 months in building any of these skills and start earning from it, which can then help you start your own e-commerce business on Amazon. Now, I know आप में से कुछ लोगों को अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की थोड़ी जल्दी होगी. In that case, you can try this second method to get your investment, and that is to raise funding like a tech startup. अब, without getting into too much details, let me tell you, for any startup or business idea, the first investors are usually the people around you in your network, like your friends, your direct or extended family, and your relatives. So, if you can put together a business plan and then go and pitch people around you about the business, you should be able to convince them to write small checks for you. Please understand that I'm not asking you to loan this money from them. मतलब उधार नहीं लेना है, आपको उनसे इन्वेस्टमेंट लेना है और एक्सचेंज में उन्हें आपको अपनी कंपनी के इक्विटी या कुछ शेयर्स देने हैं, just like a Shark Tank deal. In 2021, I was able to raise funding of almost 30 lakh rupees using this exact method for my own e-commerce business. अगर आप चाहते हो मैं इस बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली मेक श्योर दैट इस वीडियो पे 500 लाइक्स आ जाएं and go ahead and comment I want Amazon FBA below this video. So if this video has inspired you to start your own e-commerce business on Amazon, you should watch this video definitely to launch your own profitable e-commerce business in the next 100 days. Also, if you're new here, make sure that you subscribe to the channel and join our Forge community, which is India's largest Amazon global selling community. Link is going to be in the description below. I'll see you in the next one.